Okay, let's continue. The equation, we have developed the dynamics of this and we have done up to the time period and angular frequency. Now, whenever we have this situation, so solution of this is x is equal to a sine omega t plus psi. Okay, and we are doing the characteristic of SHA. The sixth one is phase. If you remember, in chemistry we have done phase. Phase means liquid phase, solid phase, gaseous phase. Same here, phase means it tells you about the position of the particle. This phase means it basically the physical quantity which represents, so please write phase, the physical quantity which represents the state of motion of particle. State of motion of particle, meaning its position, its direction, its velocity, its acceleration. Okay. So, argument of sine, argument means angle. Again, मैथ्स वालों को पता होगा argument हम तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किया है. So, argument of sine or angle of sine is called phase. Means this one. Means omega t plus psi will tell you the phase. Phase means state of the motion of the particle. Particle कौन से जगह पे, उसका वेलोसिटी क्या है, उसका ये क्या. Let's say if I tell you, let's say जैसे इसमें क्या था, we always measure, अगर ये इक्वेशन लिखा means we always measure from mean position. Let's say omega t plus psi is 0, so x will come 0. Let's say this is theta. So if theta is 0, means what? X will be 0, means particle is here. But theta is pi by 2, x will be a, means particle is at the extreme. This is 1, this is 2, this is 1, this is 2. When theta is again minus pi, तो again x will be again 0. So वापस यहाँ पे आ गया. Then fourth, theta is 3 pi by 2. X will be minus a, means particle is at the left extreme. So this way you can know it is the position. Same you can write velocity, you can write acceleration. So basically the state of motion means where is the particle. State means phase. Phase here in physics, phase meaning the position of particle, its direction, its velocity, like this. If you take theta equal to pi by 4, so it will be somewhere here. Getting this? So this is the basic part of the phase. Okay. The next is phase constant. The seventh is phase constant, that is by psi. Phase constant, ये जो पार्ट है, phase में जो ये वाला पार्ट है, that is phase constant. This is called your phase constant. What is phase constant? Phase constant basically gives you an idea. So please write, phase constant represents the initial state of motion of the particle. Initial at t is equal to 0. Phase constant represents the initial state of motion of particle. Means at t is equal to 0.
So if you put here, let's say here, if you put t is equal to 0, so we will have your x is equal to a sine of psi. So this is your phase constant. This will decide what is the state of the motion of the particle at t is equal to 0. So phase constant depends on t0. Again, t0 can be different for different person. I can have a t0 right now, someone can have a t0 after 2 seconds, someone can have a t0 after 5 seconds. So depending upon that, the psi will change. So depending upon the t means the t0, the psi will change. We'll come to that. Let's see, if I take you to this, and let's say I have taken here situation 1. Particle is at mean position. This is natural length ही होगा इसमें. It is going in this direction. It is going towards right. So write the equation of motion. ऐसा आता है. Again ये confirm है कि spring mass system है. This is K, this is M. So this will be SHM because we have just proved this. So spring mass system execute SHM. तो when you solve this, तो equation क्या आएगा? Equation यही आएगा, x is equal to a sin of omega t plus psi. तो मैंने किसी ने, let's say at this instant he has taken t is equal to 0 when the particle is at mean position going towards right. So this is state of motion कि particle is at mean position, it is going towards right. So find the phase constant. So at t is equal to 0, I have taken particle at mean position going towards right. So at t is equal to 0, x is what? X is 0 because this value means it gives a displacement from mean position. So at t is equal to 0, I am at mean position, so x is 0. Put these values here. तो क्या हो जाएगा? That is a sin of omega t 0. So it will be only psi. Put t is equal to 0 here. So this term will be 0, it will be this, and from here sin psi will be 0. So psi will be either 0 or pi होगा, and इसके बाद भी हो सकता है 2 pi 3 pi, लेकिन we write phase constant. Phase constant will be always be between 0 to 2 pi. It won't be more than 0 to 2 pi because we are initially the angle will be either 0 or 20 degree, 30 degree, 40 degree in you convert in radian. So phase constant is between greater than 0 less than equal to 2 pi. इसी में ये हो सकता है, और इसको और तुमने सिंप्लीफाई किया, if you make it more easy, तो it will be between 0 to, ठीक है, it is between 0 to 2 pi. अब इसमें से कौन सा लेंगे, 0 लेंगे कि पाई लेंगे, because दो वैल्यूज आ गए. For that you have to, means we know that at t is equal to 0 velocity is in positive direction. इसको मैंने differentiate किया तो velocity आ जाएगा, v is dx by dt, that is a omega. I hope ये सबको आएगा. Again मैं फिर से एक बार करके बता देता हूँ, d by dt of a sin omega t plus psi. A is constant, so that can be taken outside. So V is equal to, A is outside, A d by sin omega t plus psi. Again यहाँ पे omega t ये angle है तो यहाँ पे यही होना चाहिए, d of omega t plus psi, d of omega t plus psi by dt, ऐसा होगा. So V is equal to A, ये क्या हो जाएगा, cos of omega t plus psi, and ये गया अंदर तो d omega t by dt plus d psi by dt. This is 0. यहाँ पे omega constant बाहर आ जाएगा तो the finally v will be a omega cos omega t plus psi. This is simple differentiation. So if I just write here, okay, so velocity, if I just write
So ये तुम लिख लेना. So velocity becomes v becomes a omega cos omega t plus psi. हो जाएगा. This is the velocity. So here, so at t is equal to 0, v is plus v naught. है ये. Put here t 0, तो v is equal to a omega cos psi. अभी इसमें से 0 ले कि पाई ले कि ये अगर तुमने if you take here 0, तो it will be a omega. If you take psi equal to 0, तो it will give you v is equal to a omega. If you take psi is equal to pi, so that implies v is equal to minus a omega. And I have taken this as a positive. This equation is for along this. तो इसमें क्या हो जाएगा? So meaning what? कि this value we cannot take. अगर pi ले लिया तो at t is equal to 0 velocity will be negative. जबकि हमने we have taken this as a positive. Positive negative is totally upon you. You can choose anywhere. I have taken this as a positive. So this is the phase constant. So out of these two, this will be the phase constant. ये फिर phase constant नहीं होगा. Once it is known, then we can write the equation. So once it is known, we can write equation of this becomes a sine of omega t. Put here t is equal to 0. So you will get the initial state of the motion of the system. Clear है ये? Now let's say situation. So this is phase constant, mean पे है going towards right, phase constant, psi is 0. Let's say B में वैसे तुमने किया ये अभी मैं this is mean position, this is left extreme है, this is amplitude plus a. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे velocity will be 0. ये x कहाँ से करते हैं? x we measure from here, from the mean position or natural length here in this case. तो ये means left extreme पे है, sorry right extreme पे है. तो right extreme पे है तो क्या होगा? right extreme पे है तो velocity will be 0. तो ये at t is equal to 0, x is plus a. at t मैंने यहाँ पे मीन्स किसी ने इसको t लिया 0, इस वाले केस में मैंने इसको लिया था t0, यहाँ पे इसको लिया t0 is totally upon you. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x is equal to a sine of omega t0 plus psi. This is equal to plus a. तो sine of psi is plus 1. So that implies psi is equal to pi by 2. इसमें एक ही वैल्यू आ रहा है. तो you don't have second value. So अगर second value होता तो we should have gone for velocity, because velocity is a. अगर x ये है तो velocity will be a omega cos omega t plus psi. तो यहाँ पे अपने जरूरत ही नहीं है because एक ही वैल्यू आ रहा है. So for this, so phase constant for this situation where t0 is taken at the right extreme is pi by 2. So equation of motion क्या हो जाएगा? That will be x equal to a sine of omega t plus pi by 2. If you simplify this, तो x is equal to a cos omega t. So when it is at mean position going towards right, this is the equation of motion. When it is at the right extreme, this is the equation of motion. ये change क्यों हुआ? Because of phase constant. Because of phase constant, this has changed. As I said, sin and cos same है, तो this is there. ये याद रखना है कि mean पे going towards right, this will be the equation. Left extreme पे going at right extreme पे, तो this is the equation of motion. x आ गया तो उसके बाद velocity भी आ जाएगा, उसके बाद acceleration भी आ जाएगा. Now third case, if I take third case will be C will be x. Third case again at the mean position going towards negative direction. When at the mean going towards right,
we have done now going towards left. So I've taken, so someone has taken t0 here. Again, t0 depends on the person. So put here t, so यहाँ पे क्या है, t is equal to 0, x is 0 because mean पे ही है, and this equation में क्या है, we measure displacement from the mean position. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is 0 equal to a sin of psi. तो psi will be 0 और pi. इसमें से कौन सा सही है? तो ऑलरेडी वी हैव डन दैट. ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, जब राइट था तो 0 था, तो ये तो लेफ्ट होगा तो पाई. लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे. तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे दो वैल्यूज है, देन गो फॉर एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज नेगेटिव. नेगेटिव ऐसे जा रहा है बिकॉज वी हैव टेकन दिस एज अ पॉजिटिव, तो दिस विल बी नेगेटिव. वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस psi. पुट हियर, तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस v a ओमेगा cos of psi. तो psi has to be pi. Then only if you take psi 0, it won't be negative. So pi. So this is the value. So for this, equation of motion becomes x is equal to a sin of omega t plus pi. So x is equal to minus a sin of omega t. So when it was going towards right at mean point, it was plus a sin omega t. Going towards left, minus a by omega t. Now fourth case, similarly, d में तुम करोगे ऐसे ही तुम. So it is at left extreme. This is mean position. X is equal to 0. यहाँ से ये तुम्हारा minus a है. It is minus a. ठीक है. So ये at t, I have taken, so somebody has taken t0 here. So at the left, so t is equal to 0 पे x is minus a. X is minus a. So you can here write same here. Put here in this equation. So minus a equal to a sin of psi. So psi has to be 3 pi by 2 only, because sin psi is minus 1 3 pi. एक ही वैल्यू है. So equation becomes x is equal to a sin of omega t plus 3 pi by 2. So that becomes x equal to minus a cos of omega t. So let's say ये तो मैंने चार एक्सट्रीम्स लिए, बीच में भी हो सकता है, मीन्स मैक्सिमम मीन्स मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के बीच में है पार्टिकल. मीन पोजीशन, तो ट्राई दैट. So try that one as a homework. Okay, कि particle this is x0, this is a by 2, this is a. So particle, so t is equal to 0 is here, it is going towards right. इसके लिए फाइंड करो, और let's say this is a, this is x is equal to a by 2, this is t is equal to 0. Okay, going towards this, this is x, this is mean position. पार्टिकल यहाँ पे, और इसको लिया है t is equal to 0. अगेन फेज कांस्टेंट से तुम्हारा ये चेंज है, फेज कांस्टेंट से योर the motion of particle will not change. Just phase constant will decide where you have taken t is equal to 0. So दो केस है, ट्राई करके देखना क्या आता है. ठीक है. Next is, so after phase constant we have velocity v. Already इसका अपने को displacement आया था a sin of omega t plus psi. तो 7/8 जो भी है वेलोसिटी v, v क्या हो जाएगा, dx by dt. तो v will be dx by dt. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. यहाँ वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं? यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन इज सफिशिएंट बिकॉज इट इज अ लीनियर एक्सेशन. सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस, यू हैव जस्ट डन, सो a ओमेगा cos of omega t plus psi. ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन. नाउ cos, तो v,
तो मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाता है, v विल लाई बिटवीन प्लस a ओमेगा टू माइनस a ओमेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी प्लस a ओमेगा. सो दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम. भाई तुमने अगर ये कर लिया, लेट्स से v इक्वल टू a ओमेगा, टाइम के साथ करना है तो ये अगर लेट्स से वेलोसिटी वर्सेस x तुमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, v दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस साई हो जाएगी. सो हियर v विल बी a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर. सो दिस बिकम्स ओमेगा a स्क्वायर माइनस x square. So v is omega a square minus x square. You can see this is another, this is versus time, this is versus displacement. You can see v maximum कब होगा, तो v maximum is at mean position. v max will be when x is 0. So v max at x 0, that is at mean position, नॉट नेचुरल. यहाँ पे मीन और नेचुरल इक्वल है, बट इन जनरल मीन और नेचुरल इक्वल नहीं होता. तो दिस v इज इक्वल टू a ओमेगा, यू कैन सी, तो यहाँ पे लिखा है. तो ये जो दो वैल्यूज है कब होंगे, मीन पे होगा. व्हेन पार्टिकल इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन तब ये वेलोसिटी होगा. जस्ट सी दिस इज, सो दिस इज द, इफ यू ड्रॉ द, लेट्स से now if you draw the graph, let's say v versus x, तो क्या आ जाएगा, तो if you just see graphically, if I represent again v versus t, तो sinusoidal graph है, x versus t is a sinusoidal graph. now v versus x will be, again it will be a sinusoidal graph only. okay, sorry, v versus x क्या हो जाएगा, तो v is equal to ओमेगा स्क्वायर करो ओमेगा a square minus x square, so v square by omega square plus x square is equal to, यहाँ पे ऐसे कर दो, v square plus omega square x square is a square. so this is a equation of ellipse. जिनका मैथ्स नहीं है, सर्कल इज a special form of ellipse. सर्कल कब होता है, जब कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर और x स्क्वायर सेम होता है, देन इट इज अ सर्कल. अदरवाइज दिस इज अ इलिप्स. इलिप्स है तो फिर क्या आएगा, इलिप्स है तो यू कैन सी पुट द वैल्यू, x इज 0, x इज 0, तो दिस इज हियर व्हेन, एंड यहाँ पे एक और v मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे रह गया, मैक्सिमम तो हो गया, एंड v मिनिमम व्हेन x का मैक्सिमम क्या a होगा प्लस माइनस से, तो v मिनिमम will be 0 at x is equal to plus minus a पे. तो दोनों एक्सट्रीम पे वेलोसिटी विल बी मिनिमम, मींस दैट विल बी एट रेस्ट. होना भी चाहिए, पार्टिकल को लौट के आना है, तो वेलोसिटी हैज टू बी मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम दिस. सो दिस ग्राफ, इफ यू कंप्लीट दिस इलिप्स, तो ये ऐसा आ जाएगा, लेकिन टाइम नेगेटिव, वेलोसिटी यहाँ पे v वर्सेस a. this is, so it is a elliptical curve, it is minus a, this is plus a, so at both position velocity is 0, at both velocity is 0. this is v versus x, okay, velocity versus x, this is the situation. and now तो ये याद रखना है कि मीन पे मैक्सिमम, दोनों एक्सट्रीम पे वेलोसिटी इज मिनिमम. नाउ इफ आई गो फॉर नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का इसमें फिर से आएंगे. एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ गया a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस psi. नाउ एक्सेलरेशन 9th, a विल बी dv by dt. इसको ये करो डेरिवेटिव, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t plus psi. So you can see this is acceleration is also with time it is sinusoidal. With sine omega, again a sine omega t is x, so we can also a is equal to minus omega square x, जो अपना यहीं से हम लोगों ने इसको लाया था.
तो वही आना ही चाहिए। सो इसको इंटीग्रेट करके ये लाया था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। यही अपना SHM इक्वेशन था, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM इक्वेशन। सो यू कैन सी A वर्सेस X ग्राफ क्या आ जाएगा, A वर्सेस T ग्राफ इज साइन ग्राफ, साइनोसाइडल, उसमें हम बाद में बात करते हैं। देखो A वर्सेस X ग्राफ क्या हो जाएगा, दिस इज A, दिस इज X। सो हियर when X is positive, acceleration is negative, it's a straight line, दिख रही है। So it will be when X is negative, A is positive. So this is plus A, this is minus A, it's a straight line. जब X positive है, if you just put the this is mean position, when X is positive, particle यहाँ पे, तो acceleration ऐसे है, and that's why it is returning. जब पार्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मींस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ए मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखो तो ए मैक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हियर। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, maximum again, minus sign is just in physics, chemistry said minus is just represents the direction. Okay, so so mod तुमने ले लिया, तो maximum acceleration will be at the extreme positions, left extreme, right extreme, at the amplitude. Just see, this is very important. Acceleration जहाँ पे maximum है वहाँ पे velocity is 0, extreme पे velocity 0. Okay, जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वहाँ पे वेलोसिटी इज 0। एट मीन पोजीशन इफ यू सी एट x इज इक्वल टू 0 मींस एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज मिनिमम व्हिच इज इक्वल टू 0। सो जब भी पार्टिकल मीन पे आएगा देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, मींस नो नेट फोर्स। एक्सेलरेशन कब आता है, व्हेन देयर इज अ नेट फोर्स। Acceleration comes when there is a net force. So at the mean position acceleration is 0. So no acceleration mean position. At mean position का मतलब वही है कि net force is 0. So just see, we have seen the characteristic of SHM and we have done. In the next lecture, maybe today if I get time, we will be developing the further chapter, will developing the further theories for this SHM. Try to do it by yourself, try to write, try to prove the equation, take this equation and try to prove this, try to prove this. All these equations you keep in mind, and we will continue this in the next video. Thank you and keep watching Maestro Academy channel.